So my word page is visible to everyone. Okay, cool. Yep. Got it. So हम करने क्या वाले आज के वेबिनार में? Okay. See, 1 hour is very less. 1 घंटा काफी कम होता है to discuss any topic, and especially in markets. I mean, we can go for 3-4 days continuously discussing about market, and even that will be less. Okay. So 1 घंटे में बहुत सारा लिमिटेशन है कि हम क्या डिस्कस कर पाएंगे और कितना कवर कर पाएंगे. So what we'll do is we'll keep it very precise to the point webinar so that we can derive maximum value. 350 घंटा का time waste नहीं होना चाहिए. There are more than 350 people live right now, so I don't want to waste even any minute for any one of you, especially Sunday morning. I know it's very difficult for all of you to join in, so I'll make sure that it is worth it, and please continue with me for the till the last minute. Okay. Obviously I'll not be selling you anything. There's nothing, I don't have anything to sell. There's no software or anything which I'll be trying to push. Okay. What we'll be discussing is, मैं टेलीग्राम पे और ट्विटर पे बहुत सारे मेरे स्क्रीन शेयर करता हूँ या चार्ट्स शेयर करता हूँ. So वो चार्ट्स और that screen, how do I take a trade and what is the rationale of taking that trade? So what we will be discussing is, we'll not be discussing the entire technical analysis. We'll just discuss जो भी whatever the trades I share, the rationale of those trades. As we are SEBI registered investment advisors, there are a lot of limitation on us SEBI के तरफ से कि आप क्या पोस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. And we are now launching our own AIF, alternative investment fund. So the last thing anyone would want is to have any sort of issue with SEBI. So that's why we don't post direct targets and stop loss. So what is my usual target and stop loss on those trades? जो मैं चार्ट शेयर करता हूं उस पे टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहते हैं मेरे, that we'll be discussing. How do I pick those trades? How do I pick those trades? Fourth is, what sort of software I use. So there were a lot of questions, queries. Sir, which software is this? Which software is that? Then we'll be discussing what sort of setup, I mean indicators and parameters I use. So indicator and parameters मैं क्या use करता हूँ उस chart पे. And last, just by seeing the chart, how to interpret the chart, which I share. तो आपको सिर्फ जाकर आप whatever the chart I'm posting, whatever the script I'm posting, all you have to do is just open it at your end whenever during the live market, and you'll be able to interpret what I'm trying to say in that chart. Okay. So far so good. Yes, we'll be discussing, Krishna, that there's no secret about that Bollinger Band. It's very simple. And how can you identify like you? Yeah, see, I mean, I use a lot of data points to analyze my trades. Okay, so first, so this will be the kind of agenda for the day. Okay, so this is the kind of agenda what we'll be discussing. So first and foremost, if keeping this in mind, the setup the post, yeah. So the charts I post is usually from Zerodha website,
I don't use Zerodha for trading purpose. I use Zerodha just to see the charts because they're quick and easy. In a way, quick and easy. Data में बहुत गड़बड़ रहता है Zerodha के, but it is quick and easy to load them and change the script, and easy to post by taking a screenshot of Zerodha. Okay, I use a lot of yeah, so we'll be discussing it both Hindi and English. इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा आपको, ट्रस्ट मी. सो अभी मैं सबसे पहले आता हूं मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूं. सो द सॉफ्टवेयर आई यूज इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, I'll say the software which I use is first and foremost is the Blitz, जो हमारा in-house software है. Second is obviously I use Spider. My other partner use Falcon also. So मैं इन दोनों के भी ट्रेड्स काफी डालता रहता हूँ. I use Zerodha Kite to post the charts. On the paid site I used MyFNO शायद, but अभी हमने for this current month I'm not using MyFNO. iCharts करके एक टूल है and Opstra. Okay, and yeah, I forgot the most important software which I use is AmiBroker. Yes, I use so many softwares. AmiBroker is specifically used for my Nifty and Bank Nifty trades. So it is exclusively our Nifty and Bank Nifty scripts has been designed on AmiBroker. Opstra, iChart and MyFNO, these are for FNO data. FNO data, तो इसमें FNO data में I get to see the OI built up, open interest, PCR, put call ratios, vol skew and काफी कुछ जो भी F&O के related जो भी चीजें हैं, that all is through what do you say, these three platforms. All of them are paid. I'm not asking you to buy any of them, nor do I have any affiliate program with any of them. So it's just I'm just giving you what the setup I'm using. Okay, so we'll restrict this discussion to very specifics. I cannot go and talk about sensible and other topics which I'm not using. तो मैं जो use कर रहा हूँ मैं सिर्फ उस पे ही restrict करूंगा so that एक घंटे में काफी कुछ cover कर पाऊँ आपके लिए. Okay, तो थोड़ा हम इसको एक close ended session रखेंगे जहाँ पे हम restricted चीजें discuss करेंगे. Okay, Blitz is our in-house software. Spider and Falcon जो block deals क्या डेटा है उस पे अच्छे से आ जाता है block deals का डेटा, तो that real time पे so we get that. जो मेरा block deals का डेटा I often post कि block deals हो रहे हैं तो Spider and Falcon में आ जाते हैं. These are expensive softwares. These are not cheap or these are pricey softwares, but since our trading volume is such that justifies. Okay. Zerodha Kite for basic cash. Yeah. So Zerodha Kite for basic cash charts. It is good enough. Fast, web-based है. So easy to discuss and everyone have it. Zerodha या trading view. So आप ये एक बेसिक डिस्कशन कर सकते हैं. Okay. So आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा that will be totally focused on Bollinger Band setup I use. Okay, I'm a big fan of Bollinger Band. Okay, Blitz is software of my company Quant Express Technologies. इसके बारे में आपको वेबसाइट पे हमारे सब कुछ डिटेल मिल जाएगा. I'll give you the website name.
तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वेबसाइट का नाम वहां पे मिल जाएगा. सो विल नॉट गेट इनटू ब्लिट्स या उसके फंक्शनैलिटीज पे, आप वो जाके वहां पे चेक कर लो. So we'll keep our communication specific to Bollinger Band today. Okay. So I use a Bollinger Band a lot. I'm not a big fan of many indicators, and I try to keep my charts very clean. Okay. Very. Okay. Good. So yeah. I try to keep my charts very clean. Okay, we'll not discuss about what my company do. You can go to my website. You'll get all the data. So it is not this webinar is not meant to sell my company product. You can get that data there. What is webinar is this webinar का purpose यही है कि मैं जो चार्ट शेयर करता हूँ वो चार्ट को देखकर अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल सके रियल टाइम में, so we'll discuss that. Okay, everyone is fine with that? No, I mean you can ask your queries, but let's keep asking your queries related to Bollinger Band, and I'll have a last 10 minutes Q&A session, so that those who are interested can go ahead, can stay in that Q&A session, so that we are not wasting others people time. Let's respect other people time. There are more than 400 people. Yeah. So now I'll quickly share my Zerodha screen. Yeah. So now my Zerodha screen is visible. Yes. Okay. Great. Yeah, I got that. So this is a simple and the most elegant, सबसे प्यारा, सबसे simple and सबसे powerful indicator अगर कोई है तो मेरे हिसाब से it is up to me. According to me, Bollinger Band. I'm a big fan of Bollinger Band. Why? Because it is a lot of statistical tool rather than any I'll say, see the charts, patterns जो finding है ना, it is often art. Head and shoulder हर किसी को नहीं जल्दी से दिखता. Your any cup and क्या बोलते, cup and handle patterns, or these patterns, and everybody cannot quickly identify the patterns, but Bollinger Band is the most simple sort of tool. It gives you a clear example of where the volatility is dropping and when the volatility is taking off, and how is the market performing. So what parameters do I use in Bollinger Band? So I use a simple 2 Bollinger Band strategy. Okay, I couldn't find this strategy in any books or anywhere, but it's pretty simple, trust me, and it has worked for me. I'm using this. मैं ये almost 14 साल से 14 तो नहीं, हाँ 14 साल से ये Bollinger Band की strategy use कर रहा हूँ. It works for me. Okay, so what parameters I use? I use 2 Bollinger Bands. One is obviously both are your 20 exponential moving average. Okay, both are your 20 exponential moving average. First is your 2 standard deviation, and second is your 0.7 standard deviation. Okay, why 0.7 and why 2? Okay. Coming back to the Bollinger Band. Give me a second. Yeah. So now my Word file is visible. Is my Word file visible? Yeah. Okay. Cool. So yeah. So I use 2 Bollinger Band strategy.
both are 20 exponential moving average. Both are 20 exponential moving average. One is your 2 standard deviation and second is your 0.7 standard deviation. तो ये जीरोधा में कैसे प्लॉट होता है मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ. बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो इट इज वेरी इजी. सो ऑल यू हैव टू डू इज आपको जाना है बॉलिंजर बैंड में क्लिक करना है एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड प्रॉब्ली फ्रॉम वेयर एडिट सेटिंग्स में कोई भी सिस्टम हो कोई भी ट्रेडिंग व्यू हो या किसी में भी इट्स प्रीटी सिंपल एंड इट इज वेरी सेम फॉर ऑल द सिस्टम्स. सो आई यूज अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज in Bollinger Band. Period is 20. First is your obviously 20 demma. 20 demma means 20 exponential moving average Bollinger Band. And your second is you just have to go and click second one and right click your edit settings. Sorry, right click your edit settings. So this is I do it 0.7. And it is again exponential and I just color it as a red. Okay. So far so clear, all good. So what is the logic of this? One, this 20 demma or okay, this what is Bollinger Band actually? Going too fast on setting display. I'll see these setting and these things are very simple. Okay, I'll do that. Okay, got it. So आपको setting देखो ये बहुत simple है यार. मैं see let's not waste time on settings. There are things which is concept is more important than the what I'll say admin part or the setting side. Okay, so आपको दो record everyone can watch. Yeah, you can watch the recording also. So आपको क्या करना है कि दो Bollinger Band लगाने हैं चार्ट्स पे. एक एक्सपोनेंशियल 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दोनों Bollinger Band रहेंगे. एक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का रहेगा और एक 0.7 स्टैंडर्ड डेविएशन का रहेगा. ओके, या सी okay, 0.5 can give you better results, 0.7, 0.8, 0.9 can everything can give you better results. We are using 0.7 because it has worked very well for us and we have statistically tested it why it works. Okay. I'm keeping chat box open so that I get a feedback. Otherwise, it's just going to be that only I speaking and I'll not realize कि क्या सही जा रहा है या क्या गलत जा रहा है. So it's just a feedback mechanism. But via that chat box, I'm able to see how fast or how slow I'm going. Yeah. Okay. So what is Bollinger Band? Bollinger Band is a most extremely powerful tool. How it works? There's too many books written on Bollinger Band. I request every one of you to please read it. Okay, but for the sake of this webinar, I'll try and explain what is Bollinger Band. So Bollinger Band is basically, let me quickly first delete this 0.7. Okay, so Bollinger Band, as we all know, this is the common way everyone use Bollinger Band. Everyone use Bollinger Band by this way. जहां एक 20 डेमा या 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक मिड लाइन रहेगा एंड उसके ऊपर नीचे सो उसके ऊपर एंड नीचे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन रहेगी. सो व्हाट इज दिस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज सो व्हाट ये जो Bollinger Band का सेटिंग है मोस्ट कॉमनली यूज्ड है जिसमें एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की एक लाइन है या 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की एक लाइन है और उसके ऊपर और नीचे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 लाइनें हैं. ओके, सो दैट इज अ जोन आई विल से. हमने इस पे एक और प्लॉट कर दिया. सो एक सेम 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग पे हमने एक 0.7 यूज कर लिया. We use exponential moving average because exponential moving average is more reactive to the current data.
ओके ऐसे में थोड़ा स्लो हो जाता है, ईएम में थोड़ा फास्ट रहता है. सो मैंने मेरे कुछ और वेबिनार्स में और फेस टू फेस में भी एक ये कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार डिस्कस किया था. एंड आई वुड से कि एनीवन हु वांट्स टू ट्रेड ऑप्शन शुड लर्न अबाउट दिस. सो दिस इज बेल कर्व डेटा. सो टू स्टैंड, अगर हम सारे डेटा पॉइंट्स को इसमें एक प्लॉट करें तो जो व्हाट दे से कि टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि बॉलिंजर बैंड का कॉमन सेटिंग है, दैट मींस योर 97%, 97.3 something percent, whatever, of the, sorry, 92 Bollinger band is, yeah, it's a normal distribution curve. Okay, so your 95%, let me just quickly check how much it is. 2SD is 2SD data point is 95.45, yeah, exactly. So it's 95.45% of the data will remain in this range. So अगर आप Bollinger band check करोगे, so it means that जो moving average के line है, so 19, okay, whatever it is, 95, 97, let's not discuss that. So your maximum of the data points will remain in this. Okay, and what we have done is we have used a 0.7 also. So 0.7 means sorry about my drawing, it is really bad. Yeah, so 0.7 जो standard deviation होता है, मैं थोड़ा सा लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ. इट इज एक्चुअली नॉट मच रिक्वायर्ड, बट एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. 0.7 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, दैट कवर्स ऑलमोस्ट आर 50% ऑफ द डेटा पॉइंट. ओके, सो अगर मैं डेटा पॉइंट को प्लॉट करूं किसी में भी, तो 0.7 जो एरिया होता है, जो कि ये रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट विल कवर माय एटलीस्ट 50% ऑफ माय data point. So my 50% of the data point is covered in the 0.7 standard deviation zone. So again, coming back to this, so what we say is these are 4 zones. Zone number 1, 2, 3, and 4. Let me just quickly take a screenshot of this. Yeah. So what we say is this is zone 1, zone 2, zone 3, and zone 4. Okay, you getting how I derived that zone 1, 2, 3, 4? बहुत सिंपल है, मतलब कुछ नहीं है. ये जो एरिया है, यहां से लेकर ये वाला जो ग्रे जोन है, दिस इज जोन 1. 20 डेमा से ऊपर रेड वाला जो जोन है, प्लीज चेक राहुल, it must be same for everyone. This is just a mathematical number. Okay, this area is zone 3. Okay, and this area is zone 4. Okay, so zone 1 is usually a absolute bull territory. Absolute bull territory means मार्केट काफी तेज रहता है और काफी बुल्स एक्शन में रहते हैं इस जोन में. ओके, zone 4 is absolutely a bear territory. यहाँ पे bears बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंस रहता है. ओके, this zone 3 and zone 4 is kind of a no man's land. Okay, जहां पे काफी क्लैरिटी नहीं आती है कि प्राइस कहाँ या मार्केट कहाँ जाने वाला है. So what I do is, okay, it works on any time frame. I use a daily time frame.
So you can work it on a 1 hour time frame. It will automatically adjust. You can work it on a 15-minute time frame. It will be the same. So the data points remains the same. The strategy remains the same. Okay. I use a daily time frame a lot. So coming back to the so we discussed the rationale why we are using this Bollinger Band. We discussed the software I use. We discussed the indicator. So I use a Bollinger Band indicator only and a bit of RSI. Yeah, I'll come to that. Yeah, ये है ना, pick up those trades. ये we'll be discussing that. Redmi Note 7. थोड़ा सा patience. Yeah. So yes, we discussed the indicator and parameters. So this is the only indicator I use. Along with that, there's some momentum indicator like MACD and RSI, but I am not very big fan of them, and I don't know how to interpret them also. Okay, so this along with price action helps me a lot. So as an indicator, I use Bollinger Band along with price actions. It worked wonder for me. How to interpret the chart? We have discussed the zone descriptions. Yes, you can use Bollinger Band for intraday also. Yeah. Now again, coming back to the target, stop loss, and how do I pick up those trades? So अभी का recent का example अगर मैं दूं Canfin Homes का. Okay. So how we picked up Canfin Homes? Canfin Homes went really well and made some good money. Okay. So Canfin Homes was, as you can see, guys, Canfin Homes का chart दिख रहा है? Okay, great. So Canfin Homes, as you can see, it was clearly in which territory, which zone? I think chart is still, it will match here. I mean, yeah, it was a bull zone. It was a strongly bullish zone, or I'll say zone 1. No, yeah, zone 1 tha. George, it was absolutely in zone 1. I picked this trade on, I think it was Canfin Homes was, just let me go to the and open that chart only for all of us. So it will help. L&T Finance was also a classic trade. We'll discuss that also. So here be recent wali trades hai. It will help us to discuss this. So Canfin Homes, we picked it up on this was 31st March. Yeah. So 31st March, matlab parso, matlab Thursday go. We picked it up around here. So obviously there was a price volume breakout in that. Okay. There was kind of a Bollinger Band के zone 1 में था and उस पे हमको breakout दिखा. उसके साथ साथ we saw a breakout of volume, open interest and OI change in the option side. So I'll not get into the OI क्या होता है या OI change कैसे होता है. I'll not get into that today right now, because that's a altogether different topic, and it will take us at least 4 or 5 days to cover the entire call put OI and how the OI works. So there was a good volume breakout here, okay, and it was a complete breakout trade. So even I wrote it Canfin Home looking good as a. I track on a daily time frame. Okay, so it was clearly giving a good breakout on that particular day. As you can see, there was a good candle. उसने उस आगे के सारे highs निकाल दिए थे. So this was the previous highs around यहाँ पे. So ये सारे highs निकाल दिया था उसने. Just let me. So it closed out all the highs and then we entered in that particular trade. Yeah, it works on everything. I mean, it can work on anything, commodity, equity, stock, index. It will work on anything. So most of my trade is usually, if it's a bullish trade, I'll pick it in this zone 1, or it's giving a breakout from zone 2 to zone 1.
Okay. So most of my trades are it has to be in zone 1. If it's a trade for me, I'll prefer to trade in the zone 1 only. Okay. Or it is moving out, or it is coming out from your zone 2 to it is moving into the zone 1. Okay. And my bearish trades is usually when price is in this zone, I'll say 4, or it is breaking down from zone 3 to zone 4. Okay. So that is what I usually trade. I usually trade as a momentum and a swing trader. So what is the rationale of taking the trade is, and how to find the target and stop loss. So one is, yeah, it works on all time frames. Yeah, I've told you it works on. I don't think it will work on less than 10 minutes time frame or 15-minute time frame, but it works wonder on a 15-minute time frame. उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में थोड़ा नॉइज ज्यादा हो जाता है. So up to 15-minute time frame it works wonder, and it works absolutely amazing on your weekly time frame also. वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या ब्रेकआउट है कैनफिन होम्स का. So just imagine where Canfin Home will be in this coming weeks. So I use a lot of multi time frame charts, specifically in AMI Broker. Yeah, so I usually do a stock screening at the end of the day, and I know which stock is in which zone. So it is predefined, and I only look for stocks which are in zone 1 for giving a breakout trade. So I trade only, or I see only and only stocks which are what do you say, which are mostly the F&O stocks only. And okay, NFL was again a good case. See, NFL was absolutely in zone 1 category, zone 1 territory. Okay, and it gave a good breakout trade that particular day, and it moved almost 10%. This stock, what trade I discussed even on air, TV पे भी मैंने सुबह 10 बजे बोला था, and that time it was hardly 1.5 or 2% up. Okay, and it moved up to straight away up to 10%. तो हमने वो सब AMI Broker पे और Blitz पे वो सब लगा रखा है, काफी screeners, which gives me a screening that the stocks which are in zone 1, तो वो लिस्ट आ जाती है. आप ये मैनुअली भी कर सकते हो अगर आप this particular candle, ये particular candle पे लास्ट 1 तारीख को, या I took the trade. You'll find there on my Twitter timeline कभी ट्रेड लिया था और उसका क्या टारगेट डिस्कस किया था हमने. ऑन एयर है वो. या okay, so coming back, we don't know when the trend will exhaust. Okay, nobody knows when the trend will exhaust. So NFL is national fertilizer. NFL, national fertilizer. Okay, so coming back to your HDFC Bank. HDFC Bank is the trade which is on. Kind of, we picked it around at 1485 and 1490 level. So it was just 1485 के ऊपर एक breakout आया था. We entered in that trade, and it closed at 1506. If you'll see HDFC Bank का OI's data, so you'll see there are a lot of call writers which are stuck in 1500. अगर ये यहाँ पे sustain करता है, so obviously it can go up to 1550 level. Okay, so that is, we mix it a lot of Bollinger Band along with price action and the OI data. So the blend of 3-4 things works perfectly fine for us. Okay. Yeah. Now coming back to that point is, what are the target and stop losses? So I usually enter a trade which is up. ये मेरे को कैटेगरीली लिख देने दो आप लोग सबके लिए. So what trade I enter?
I enter a trade or a stock. I enter a trade which is up 1 to 2% on इंट्राडे बेसिस. मतलब इंट्राडे के लिए या मतलब उस दिन में वो स्टॉक 1 से 2% कम से कम अप होना ही चाहिए. मतलब अगर वो स्टॉक नीचे रेड में है, आई विल नॉट टेक दैट ट्रेड. ओके, आई विल नॉट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ. आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि आई कैन ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड. So I am just a trend follower, obviously with a very small quantity of couple of lots or couple of maybe 10, 15, 20, 100 lots. I cannot create a trend. Okay, so we always enter a trade which is up at least 1 to 2% minimum. Okay. Why 1 to 2%? Because it gives us a cushion. एक कोई स्मार्ट मनी, कोई बड़ा फंड, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ने खरीद रखा होगा, तभी वो प्राइस मूव कर रहा है. ऑब्वियसली जोन 1 में या जोन 2, इन दोनों में से एक जोन में रहना चाहिए. जोन 1 ये हो गया, जोन 2 ये हो गया. मतलब 20 डेमा से ऊपर होना चाहिए वो स्टॉक. प्रेफरेबली जोन 1 में होना चाहिए, या जोन 2 से ब्रेकआउट दे रहा होगा जोन 1 की तरफ. देन ओनली आई विल बी एंटरिंग इन दैट ट्रेड. Okay, so that is the first and foremost logic. So enter a trade which is up 1 and 2%. Second is it must be in zone 1 for a long trade. This is what we are discussing for long side trade. Okay, so it must be in zone 1 or zone 2 का एक breakout आ रहा होगा. Okay. Third is it has to be a significant volume plus OI data should be supportive to that. Yeah, zone 1 on 1 day chart. Absolutely. I told you I track only on the daily chart. Okay. Now, where is so this is the logic of entering into a trade. Okay. Now coming back to the stop loss. What is the stop loss? Very important. This is what I was coming to Prashant. Stop loss is usually ये जो 1-2% का upswing आ चुका है. What is OI? Tashvi, please Google it. You'll get a lot of n number of data, n number of videos, article on OI, books तो बहुत सारे मिल जाएंगे. Or I can take any webinar on OI. I'll be happy to do that. So I can plan it webinar on OI. But let's not discuss that today. Okay. Yeah. So stop loss is coming back to here. So अभी हमने pick कैसे करते हैं वो discuss किया. Now coming back to the stop loss I use. So obviously stop loss is first and foremost. Stop loss is so when I say about stop loss, कितना stop loss होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? Exactly. Days low, swing low, lower zone. So best is जो आज का डे का स्विंग है, मतलब 1 से 2% का, वो तो स्टॉप लॉस है ही मेरा. ठीक है. That is my stop loss. Plus I add some more points. मतलब exactly आज का लो नहीं, लो से थोड़ा सा नीचे, उस लो से I try and put थोड़ा सा नीचे, या where I think is, जैसे this was the stop loss which was अभी कैनफिन होम्स का ही बात करूं. So this was a particular trade. Okay, as we are SEBI registered, it becomes very difficult to give exact target, your stop loss and everything on a social media. Okay, so what we do is we try to highlight by 2 lines. I try to highlight where I'm keeping my stop loss and where I'm keeping my target. Okay.
It is possible to take an option trade here on that. It's possible to do anything. And you can trade future, you can trade option. I trade option. I sell a lot of options. We do option selling through spreads. I've discussed that in my Vivek Bajaj video. Yeah. So here you can say the swing low was really low. Swing low 615 का ही करीब था. तो what we thought is it is good कि ये last दिन का जो high है उससे थोड़ा सा नीचे. तो 620 मतलब 618 was my kind of the stop loss. Okay. I use daily time frame, daily time frame, daily time frame. I track daily time frame and I track उस daily time frame में कभी भी breakout आया, I enter that trade. So I prefer to enter my trade by 12 in the day so that 2-3 घंटे में उस swing आकर मेरे को exit मिलने के chances ज्यादा हो जाते हैं. अगर 12 बजे के बाद में enter कर रहा हूँ trade, then it is usually a BTST type of a trade or a carry trade. Okay. Now coming back, so there's no fixed formula for the stop loss. It is lot driven on the price actions. Okay. जैसे अभी HDFC का trade है. So we entered at almost 1485 kind of a level, but we are keeping a stop loss almost close to 1470 to 1470 के करीब big stop loss. Why? Because that was the low almost, and this is a good support point also here. Okay. Yeah, obviously everyone trails stop loss. All good traders have to do trailing of stop loss. All good traders have to do pyramiding. So I enter a small quantity, and as my trade goes in my favor, I keep on adding to the position size. Okay. So अगर जितना trade मेरे favor में जा रहा है, मेरी position उतनी बढ़ती रहती है. So I think all the traders do that. So that's very common and normal. That is not inverse pyramiding. Okay. So all the good traders I know, they all do inverse pyramiding. That is like a holy grail. हर अच्छा trader inverse pyramiding करता ही है. Inverse pyramiding क्या होता है? Yeah, Asit sir is, I am sure he's an expert on inverse pyramiding, and his trading style is amazing. I mean, if somebody has to really learn option buying, then Asit sir is or his videos, his entire discussion is absolutely amazing. So yeah, I am more of a seller. I have to learn option buying. So yeah. So I've not made ever money in option buying. See, option buying is a very I'll say it's very high level of skill required. Option selling कोई भी कर सकता है और कोई भी पैसा कमा सकता है. Option selling में बहुत ज़्यादा skill set नहीं चाहिए. Option buying के लिए and उसमें buying करके पैसा कमाना, you really need to be a professional. Asit sir का contact number. Okay, I don't have Asit sir's contact. I mean, even if I have, I cannot share it. So you can follow him on Twitter. You can follow him on YouTube. He's given enough of data points. Okay, coming back to so yeah, अभी stop loss तो defined हो गया, ठीक है? How to find the target? So one target is usually the Bollinger Band के upper band पे. That's a good point to book some profit and then carry the trade. Secondly, how do I define my target is I take my stop loss उस particular trade का whatever is my stop loss percentage, ठीक है? Whatever is my stop loss percentage, I into it by 1.5 or 2 depending on the trade. अभी जैसे मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी बीच में, मतलब मार्च के स्टार्ट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था. सो आई वाज यूजिंग 1.5 क्योंकि बहुत सारे स्विंग्स जो है या ब्रेकआउट्स फेल हो रहे थे. सो व्हाट आई वाज डूइंग इज आई वाज यूजिंग 1.5. अगर बहुत ट्रेंडिंग रहता है तो वी गो 2 और 3. हाउ डू वी डिसाइड दैट? बेस्ड ऑन विक्स, बेस्ड ऑन ATR, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी and based on Bollinger Band का squeeze. Okay.
Bollinger Band squeeze and Bollinger Band burst are two very important concepts. You can just Google it. There are enough videos on it. Please read. So Bollinger Band squeeze and Bollinger Band का your burst. ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है. I'll say don't watch YouTube videos क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उतना कंटेंट अच्छा नहीं रहता है. I prefer reading books. Okay. It may be your choice. If you are not comfortable in reading books, you can go and do the YouTube search. YouTube search में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड कोई भी कंटेंट डाल सकता है. सी कोई एक बुक लिख रहा है तो उस बुक लिखने के लिए इजी नहीं होता है बुक लिखना. यू रियली हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. बट यूट्यूब वीडियो बनाना किसी को कोई भी बना देता है. ठीक है. एंड देयर आर सो मेनी क्रैप वीडियोस ऑन यूट्यूब जिसको मिलियन व्यूज है एंड उसमें बकवास. इनफैक्ट यूट्यूब में बकवास ज्यादा ट्रेंड करता है. Okay, so prefer if you are very serious. If you want to make a bridge, you'll not go and do the YouTube search and make a bridge. अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन का है और अगर आपको 100 तले की बिल्डिंग बनानी है तो आप जाकर क्या बोलते हैं YouTube देखकर आप बिल्डिंग बनाने का कोर्स नहीं सीखोगे. You'll go to a proper IIT college or you'll hire some IITian. और you'll buy the best book. अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है and if you want to be a full-time trader, full-time professional trader and want to make a full-time profession out of it, read books. Don't what I'll say, don't survive. आप YouTube के भरोसे मत बैठो. YouTube के भरोसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते. YouTube के भरोसे आप एक 100 तले की बिल्डिंग नहीं बना सकते. दिस इज वेरी श्योर. आई एम वेरी श्योर. देयर आर मेनी यूट्यूबर्स who will blame me for this, but yeah, they have very good books. I'll share all the books detail on at the Telegram channel. I'll share the books. Yeah. So Bollinger Band squeeze, Bollinger Band burst and Bollinger Band walk. ये तीन concepts are very important. How a stock do a band walk? Asit Baran. I mean, just go and search Asit Baran. यार, Twitter, Telegram, सब जगह is very famous. Okay. So ये तीन concept आप Bollinger Band पे खुद जरूर जाकर as a take away of the webinar आप ये जाके जरूर पढ़ना. बहुत ज्यादा learning मिलेगी आपको इस पे Bollinger Band के ऊपर. Bollinger Band के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है ऑलरेडी. दे आर फैबुलस. प्लीज रीड देम. आई विल शेयर द लिंक विथ यू ऑन द टेलीग्राम. ओके. नाउ कमिंग बैक टू द स्टॉप लॉस एंड टारगेट. सो ऑब्वियसली माय टारगेट्स आर माय स्टॉप लॉस into 1.5 or 2 or 3, depend on the volatility of the market. Okay, so on a very trending day, on a trending stock, we may have a 3 kind of volatility. How do I guys okay, how do we know if it's a trending day? Aapki vol is getting dropped. Volatile VIX index is, if my VIX index is say agar mera long side hai and my VIX is less than 15, so VIX is 15 or less, so I'll prefer up to even 3. Okay, if it's a short trade, my VIX is above 25. I mean, it's not my time. You're actually if we are not talking about Bollinger Band, you're wasting other people time also. So there are 400 people, so collectively we will be wasting 400 hours. So I really want to make sure that every one of you get some value out of this webinar today, and
जो मैं चार्ट पोस्ट कर रहा हूं उससे शायद आपका कुछ थोड़ा भला हो. I don't know how much it will be helpful for you guys, but I'll try my best so that at least आप सही ट्रेड नहीं ले तो अगर आपका गलत ट्रेड है उस समय, शॉर्ट है उस पोजीशन पे, तो आप वहां से निकल सको. ओके. या ओके. सो विक्स, अगर ये 3 का वैल्यू कहां से आएगा, हाउ डू आई से 3 का टारगेट रखना है, मतलब स्टॉप लॉस इनटू 3 इज माय विक्स. अगर लॉन्ग साइड में 15 से नीचे है विक्स तो मैं लॉन्ग साइड में 3 तक का भी टारगेट रख सकता हूं. अगर विक्स इज अबव 25 मैं शॉर्ट साइड में अप टू 3 टाइम्स का टारगेट रख सकता हूं, बट ये बहुत कम मिलता है. यूजुअली आई एंड exit, try to exit at 1.5 or 2 times of the stop loss. तो अगर मेरा stop loss 10 रुपए है, it's rupees 10, so my target would be 1.5 is equals to 15 rupees, or 10 into 2 is 20 rupees target. Yeah, VIX means higher volatility. Usually when market is falling, VIX usually, I'm not saying this is a thumb rule, जब मार्केट अच्छा ट्रेंड अप में रहेगा तो विक्स कम हो जाता है, एंड जब मार्केट गिरता रहता है तो विक्स बढ़ जाता है. तो हमने देखा है कोरोना के समय 80 विक्स भी गया था मार्केट, और बजट या कोई इवेंट से पहले 20-25 विक्स से ऊपर चला जाता है. तो एक अच्छा शॉर्ट साइड में ट्रेंड बनता है जब विक्स नीचे रहता है. Okay, stop loss is usually my day low plus some cushion. So stop loss is my day low plus some buffer. बफर मतलब अगर मेरा डे लो 2% का है, मतलब अगर स्विंग ऑलरेडी 2% कर चुका है तो आई मे एड अ 0.5 और 0.7 इनटू दैट. एक प्राइस एक्शन के बेस पे मैं वो सपोर्ट ढूंढकर, तो आई कीप ट्राई एंड कीप 3% का और 2.5 2.7. सो एनीथिंग बिटवीन एनीथिंग बिटवीन 2.5 टू 3% का मेरा एसएल रहेगा. माय टारगेट विल बी obviously anything between 4.5 to 6%. अभी ये 4.5 कैसे आया, प्लीज डू द मैथ, और आप वापस ये वीडियो देख लेना, यू विल गेट इट. ओके सर, is possible to give call or put on Nifty Bank Nifty Telegram channel? No, we are not allowed Nifty Bank Nifty या call put के बारे में देना. सेबी के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, तो नहीं दे सकते. I mean, we actually, as per SEBI restriction, we cannot even. There are a lot of restrictions. मतलब मेरा अगर we are engaging with any client, we have to have what do you say? Their KYC done, their risk profiling done. So and we my clients includes, I mean, we cater to family offices and HNI clients for the investment side. So it is sort of an agreement with them also कि हम SEBI का कोई भी rule नहीं तोड़ेंगे, because that is what our business is all dependent on, SEBI license and registrations. So we make sure कि हम कोई भी SEBI के rules नहीं तोड़े. Obviously unknowingly कभी कुछ अगर हो जाता है तो we that is something which is not in our hand. Okay, coming back to यार आप यूज कर लो जिरोधा के चार्ट पे, सबको मिल जाएगा यार वो जिरोधा के चार्ट पे एवरीवन विल गेट, और ट्रेडिंग व्यू पे 0.7 0.2 इट्स नथिंग वेरी डिफिकल्ट. ओके, कमिंग बैक टू द LNT ट्रेड. LNT trade is again a classic example. So I don't
buying में or selling में, we don't do naked buying and selling, we do lot of spreads. अगर मैं L&T के ट्रेड की बात करूं, so trade was a bull spread L&T फाइनेंस का, एंड एक 30,000 का पर लॉट का कॉस्टिंग पड़ रहा था, एंड ऑलमोस्ट 6,500 तक का प्रॉफिट उस ट्रेड में आया. I've already discussed what is the logic of 0.7 standard deviation. Please just watch this video again. So L&T trade, classic example. See the kind of breakout and see where is the chart. Okay, where is the chart? Where is which zone it is, and just plot the volume also इसमें. So हमारे we plot volume also इसमें, and we use a lot of VWAP and other things also. Yes, second studies में. Let me just put volume. See the kind of volume it happened. Obviously, इस दिन L&T ने खुद ने L&T के मैनेजमेंट ने खुद ने शेयर्स खरीदा था. Okay, so obviously there was a big volume breakout, and otherwise also there was a good volume in this. Stock एक बहुत बड़े वॉल्यूम के बाद एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, but obviously the trend was still very up, trend was very much intact, and एक अच्छा breakout trade हमको मिला. Since it was the start of the month, we thought of to go through a option route, क्योंकि L&T has been very volatile. एक 20% के मूव के बाद एक 7-8% का ड्रॉप भी आया था. Okay, तो इसीलिए हमने instead of going through futures, we tried to went through the option, क्योंकि limited risk and defined risk हो जाता है option में. So we didn't went with the naked option. We bought 82 का एक call and we sold 90 का एक call. So you can see where is 90. Was it making sense to sell 90 का call? क्या सेंस बन रहा था 90 के कॉल बेचकर? We bought 82 का लॉन्ग कॉल and we sold 90 का. So L&T के ट्रेड में, L&T फाइनेंस obviously, L&T फाइनेंस में we bought 82 का CE बाय किया था and 90 का CE सेल किया था. Yes, it was a resistance. It was a 2 Bollinger band. क्या बोलते हैं, 2 Bollinger band का अपर लेवल था. There was a good Bollinger band spike, and 82 was almost in the money. This was a deep out of the money, so it was making sense कि यहाँ पे ऐसे भी इतना ज्यादा हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इससे ऊपर फटेगा. फटा भी तो it will give us good money, so it was just making sense to do this trade. Why, where it was going down, yaar? So Raj Singh, it was absolutely in this zone. Which zone it is? So Raj, which zone it is? L&T? Zone 1, exactly. तो zone 1 में I go long. I don't care daily में अगर थोड़ा सा consolidate भी कर रहा है price, that is okay. But my trade is in zone 1. or maximum in zone 2 if it's a long trade. Doesn't matter, there was a volume breakout on that particular day. So only after the volume breakout, in fact, there was a good recovery we have seen, and the OI build up was very strong. OI का unwinding काफी अच्छा हो रहा था. Okay, so this trade was I entered here. I think 31st को ये trade enter किया था मैंने. Let me quickly find out. Yes, 31st को this trade was entered 1 बजे के करीब. So there was a good amount of recovery which has happened that day, and there was still price was kind of एक support base बनाकर एक bounce back देने की तैयारी में था. And जिस हिसाब से OI का डेटा था, it was looking good कि ये burst हो सकता है. And that day, the next day it moved 3.5% almost. Okay, so coming back to the points which we wanted to discuss. So we discussed target and stop loss. We discussed how we pick up the
those trades. So pick up कैसे करते हैं? Enter a trade which is up. So first and foremost criteria यही है कि enter a trade which is up 1 to 2% on an intraday basis. ठीक है, LNT was not, but there was a OI का काफी अच्छा था. Zone 1 obviously में था, and volume and OI breakout, and intraday level पे charts पे price, or in fact price was consolidating and price was stabilizing near 80-81 level. तो प्राइस ने एक बेस बनाने का फॉर्मेशन का स्टार्ट कर दिया था 80-81 के लेवल पे. I just explained why we bought the call and why we didn't went for the futures, because of the volatility. Because there was too much of volatility, there was some red candles, that's why we didn't went for the futures, we went for the option. तो अभी 2 मिनट पहले ही वो डिस्कस किया अपन ने कि स्टॉक वाज. So it would be great if you could let us know how you pick up a day in advance based on freely available screeners like something. I don't know. See, I use a lot of softwares. I mean, I don't know how we can. I mean, we use this many softwares to identify the trade and do our trades. So yeah. So, but you can still by just reading the EOD charts, end of the day charts, and which zone it is, you can make it out. And us particular zone में, if you find any good breakout trade, which is up 1 or 2%, you can enter that trade with a small stop loss and with a good risk reward. Okay, so I'll now start the. We can do a bit of Q&A session regarding to Bollinger Band, इस particular strategy पे. So what I'll do is I'll try and unmute you all. You can raise hand. I'll try to unmute you so that we can do this. So we'll discuss only and only related to Bollinger Band, not OI, not anything else. So quickly let me find here. कैसे इसको करते हैं? I'm not very good with webinars. मेरे को सिर्फ देखने दो किन्होंने रेस हैंड किया है and how can I allow that? Yeah. Yes, Rikesh, I've given you. Yeah, Nitin, go ahead. Good morning, sir. Yes. Sir, this said Swaraj Pani. Sir, actually I joined the meeting a bit late. So if you can repeat the setup for this Bollinger Band. Not possible, dude. I mean, there are 250, 300 people. The recording will be available. Okay. Thank you, sir. Those who have raised hand, I have asked. I've tried to unmute them. आप खुद से आप unmute करके question raise पूछ सकते हो. Hello. Yeah, Rakesh. Yeah, good morning, Ashish ji. It was really very fantastic session. I just want to know, हम लोग जो ट्रेड करते हैं, नेकेड फ्यूचर लेना चाहिए या विद हेजिंग लेना चाहिए, सम बाय पुट और? Sir, I prefer to hedge my positions always. तो मैं काफी कुछ hedge कर लेता हूँ. I trade spreads a lot. I try to sell covered calls काफी करते हैं हम लोग. और covered calls के साथ we try to protect through via put also. But obviously hedging have a cost involved. तो cost benefit analysis करना पड़ता है हर trade पे. So what is the logic behind it? Means like in HDFC or L&T Finance, because they are more liquid trades. Yeah. So I trade counters which are mostly liquid. F&O counters में ही trade करता हूँ. And F&O counters में I try to trade the top 50 or 60 counters. तो उसमें liquidity काफी अच्छी रहती है. Yeah. Those who have raised hand, I have
given them the permission to unmute themselves. Hello, Ashish ji. Ian here. Yeah. What is the win-loss ratio in this Bollinger Band setup that you have? So see, there's no clear defined कि Bollinger Band में कैंसिल मतलब कोई भी ट्रेड कहाँ तक जाएगा, हम अपना पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं और उस स्टॉप लॉस के बेसिस पे भी डिफाइन द टारगेट. टारगेट की बात नहीं कर रहा सर. हाँ, विन लॉस on a usual you will find 60 to 70% of your trades going in profit. All right, thank you so much. It was an amazing session. Thank you you for sharing your knowledge. Yeah. Hello, this is Rajan sir. Yeah, Rajan ji. मैंने ये जानना था सर कि बोलिंजर बैंड आप जो सेटअप में लगाए हुए हैं वो कभी कभी चैलेंज हो जाता है और उसके बाद जो है वापस जो है नॉर्मल पोजीशन पे आता है, तो वो किस तरह जज किया जाए कि ये चैलेंज ही रहेगा कंटिन्यूअसली? उसके लिए आपको ब्रेकआउट्स देखने पड़ेंगे, वॉल्यूम ब्रेकआउट्स एंड ओआई डेटा, तो एंड प्राइस एक्शन. तो तीन का अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करना चालू कर दोगे तो इट विल वर्क वेरी ब्यूटिफुली. मतलब आपके ऑब्वियसली उसके बाद भी 30% ऑफ द ट्रेड्स जो होंगे स्टॉप लॉस बचेंगे, बट अगर आपका 1.5 का भी अगर रिस्क रिवॉर्ड है तो आप एंड ऑफ द मंथ यू विल बी इन गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. आई कैन गारंटी दैट. नहीं, इन एडिशन टू दिस एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछना था कि ईओडी बेसिस पे आपने देख लिया कि जोन 1 में है स्टॉक, तो नेक्स्ट डे एंट्री जो है वो किस टाइम फ्रेम में उसे जज करना चाहिए? या वेरी गुड क्वेश्चन. तो फर्स्ट डे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से स्टॉक्स ईओडी बेसिस पे उस स्क्रीनर लगाकर, उसके बाद वी सी उसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्पाइक कहाँ आ रहा है, उसके बाद ही हम एंटर करते हैं. और उस स्टॉक 1.5% 2% का मूव आ जाने के बाद. That means you mean to say कि इंट्राडे में 5 मिनट्स 15 मिनट्स में देखना चाहिए उसका मूवमेंट और उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए? हाँ, उसके लिए भी हाँ एग्जैक्टली. तो 5-7 मिनट या 10 मिनट के टूल पे आप इंडिकेटर पे आप चेक कर सकते हो कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो उस ब्रेकआउट पे आप एंटर करो. राइट. और सर ये बीबी स्क्वीज और ये थोड़ा सा चार्ट के बेस पे दिखा सकते हैं बीबी स्क्वीज किस तरह देखा जाएगा या तो बीबी बस्ट किस तरह देखा जाएगा एक कंसेप्ट के तौर पे ऑन एनी चार्ट? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ सबके क्वेरीज लेने के बाद ये डिस्कस करूँ. Okay sir, thank you very much. It's a good session. Understand how you are posting the charts. Thank you. Good morning, sir. Ashish. Hello. Ashish. Yeah. Hello. Just any one of you can answer. I'll try answer all of your queries. So don't worry. अगर एक जन हेलो आशीष, जवाब देके आशीष भाई. हाँ, आशीष भाई, चेतन हियर. अच्छा सेशन रहा, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैं, लेकिन मेरा क्वेरी है, आप ओपन इंटरेस्ट में फ्यूचर का देखते हो या फिर पीसीआर देखते हो या ओपन इंटरेस्ट का जो हाईएस्ट ओआई स्ट्राइक और लोएस्ट ओआई स्ट्राइक को कॉल पुट का देखते हो, कैसे देखते हो? मतलब वहां से वो हाईएस्ट ओआई होगा स्ट्राइक पे तो वहां से तो वो रिटर्न कर जाएगा. मैं बता रहा हूँ. वेरी गुड क्वेश्चन चेतन जी. नॉट रेलेवेंट फॉर द डे बट आई स्टिल आंसर इट क्योंकि आज ओआई का टॉपिक नहीं है हमारा. तो मैं फ्यूचर का भी ओआई देखता हूँ, कॉल पुट का भी देखता हूँ, पीसीआर भी देखता हूँ एंड 0.4 से 0.6 डेल्टा का ओआई का क्यूमुलेटिव ओआई मूव कैसा हो रहा है. तो वो बहुत ज्यादा ट्रैक करता है. 0.4 से 0.6 डेल्टा का क्यूमुलेटिव ओआई मूवमेंट. थैंक यू. तो मतलब उसका डेल्टा का क्लब भी करते हो, कॉल डेल्टा और पुट डेल्टा अबव 1 हो जाता है तो कुछ हो जाता है स्ट्राइक पे? यस, अगर वो मूव कर रहा है. देखो हमारा लॉजिक ऐसा है कि मार्केट ना मैं चलाता हूँ ना आप चलाते हो ना कोई दूसरा चला पाता है, और कैश में जो खरीद रहे हो तो और भी नहीं चला पाता. मार्केट जो चला रहा है वो ऑप्शन सेलर चलाता है. तो ऑप्शन सेलर जब अपनी पोजीशन क्लोज करेगा तो मार्केट में आपको स्विंग देखने मिलेगा. तो हम ऑप्शन सेलर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं वो क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से उसके पोजीशन लेने के बाद वी ट्राई टू फॉलो हिम. वी डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट एनीवन, वी जस्ट ट्राई टू फॉलो द मार्केट. I am doing option spread selling side, but I am bit weak in the adjustment part. So we can discuss और एक वेबिनार प्लान कर सकते हैं उसके लिए. तो एडजस्टमेंट के लिए कोई किसी प्लान नहीं देते, स्पेशली एडजस्टमेंट करना अच्छा है. We'll stick our restriction to BB today. Yeah. Okay. सर इसको स्कैनर में डाल सकते हैं स्पाइडर के. Yeah. This is Darsh here. Hello. Yeah, go ahead, Dash.
See, when you're taking when you're planning to take the trade, you look at some parameters, right? So which parameter do you give a lot of importance to? Volume for sure, OI and the breakouts. Price सर इन action. सबको स्पाइडर के स्कैनर में डाल सकते हैं सारे मल्टीपल क्वेरीज को मिला के? आप स्पाइडर के स्कैनर में डाल सकते हो ना. स्पाइडर इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बोथ स्पाइडर एंड फाल्कन. उसमें आप काफी कुछ स्कैनर पे डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें. Hello, Ashish sir. This is Hi, Ashish. Yeah, Rakesh. This is little off topic, if you permit me. Go ahead. In your face-to-face video with me, you had mentioned about some strategies on expiry date. I was willing to learn that strategy. I tried to reach you on your Twitter handle also, but failed to receive any reply. So, is there any plans to teach that for a fee or something? I was really interested in that. See, we do. Okay, I mean, it is off topic, but I'll just quickly answer in 2 minutes or less than 1 minute, I'll say. So we do a lot of strategy on credit spread and calendar spread, which I discussed on F2F also. So this F2F was not meant for retail people. It was meant for people who really want to do some serious trading and some professional trading. So yeah, so we, out of like our 6-7 years of weekly option trading experience, 5-6 years I'll say, we find calendar spread works amazing on Wednesday and Thursday. We use a lot of calendar spreads on Wednesday and Thursday, and Friday, Monday and Tuesday we do a lot of credit spreads. Okay. So as an expiry day, you can try calendar spread. It gives amazing return more than your 920 straddle or something like that, what is very YouTube trades. So how to go about it? How to learn more about it? I mean, before we can discuss it offline. You DM me on Twitter. I'll be happy to help. Okay, thank you. Yeah. Hi Ashish. Yes. Krishna here. Hi Krishna. Excellent webinar. I have 2 questions. Yeah. One, how do you decide the extent of this spread? Like L&T Finance, 82 and 90 you did. Why not 82 and 86 or for any other number? So 86, how do you decide? Again, 86, 88, there was no liquidity much. 90 was a round off number. There was a good amount of liquidity. What do you say? Option premium was very easily available, and the bid-ask spread was good. And that's it. I know. And 90 was deep out of the money, so we could have used 88 also, but 88 में liquidity नहीं था. So अगर कोई दूसरा स्टॉक हो, रिलायंस हो, ये हो, तो उसका क्या certain percentage आप डिसाइड करते हो कि 2600, 2700 या how do you go about it? हाँ, there's a certain percentage. And what's that? 2 BB के ऊपर का कोई भी अच्छा liquidity वाला. Okay, 2 BB के ऊपर वाला. Okay. 2 Bollinger Band standard deviation के ऊपर का, जिसमें भी अच्छी liquidity round of number है, उसको sell करना है. Sell that. If I'm going long in the money वाला option में. Okay. Second question: can this setup, BB setup, be used for long-term investment? What do you mean by long-term? 6 months, 1 year, 2 years. It works, but you'll have to use monthly and a weekly chart. Yeah, a weekly and monthly money, same setup can be applied. Yes. Okay, thanks Ashish. It was an excellent webinar. Learned many things. Thanks a lot. Thank you. I'm glad that some of you find value in this session and आपका time waste नहीं हुआ. It was worth your time. Hello sir. Hello. Yeah. Yeah, it's Murari Sharma sir. Ashish sir. Yeah, Murari ji. ये बहुत अच्छा सेशन था सर. बहुत पेशेंटली हम वेट कर रहे थे और रियली मतलब बैठ के इतना टाइम जो दिए और आप जो बताए रियली अमेजिंग था. आपका फेस टू फेस हम नहीं देख पाए हैं. इनफैक्ट हम विवेक बजाज को बहुत फॉलो करते हैं, बट पता नहीं कैसे मिस हो गया. सर आपका क्वेरी क्या है? मतलब थैंक यू फॉर योर क्वेरी सर यही था सर कि बहुत अच्छा रहा सर और वी आर डिस्परेटली वेटिंग फॉर ओपन इंटरेस्ट का. ये करवाइए. मतलब इतना सिंपल वे में आप समझाए ना कि कुछ पूछने का है ही नहीं. थैंक्स सर. थैंक यू. थैंक्स गिविंग सर. थैंक यू सर. हेलो. यस. हेलो सर. हाँ. शुभम here. Yeah, Shubham. I think there's an echo in your voice. Can you check? Sorry, just a second. Hello. Yeah, is it okay now? Yeah, Shubham, go ahead fast. Yeah, sir. Very thankful. I am very thankful for you, and I'm
I'm very inspired by you. Every time you post the chart, I go to OI thing and I try to analyze the multiple things from that. So basically, I have designed the OI scanner where it gives out the highest OI in the series, considering the cumulative OI of the all three series that are active. So it gives in intraday manner also. So I have learned that from your chart only, from pictures that you earlier posted from FNO, my FNO thing. So I need little help on that. I am trying to improve on PCR Shubham, related thing. since it is your query is related to why, I'll be happy to help. Please DM me on my Twitter. We can discuss it offline. Actually, I have once contacted you 2 months back on your office contact, but you were not. I'm sorry, I missed your chat. I'll try to. Please send me again. Connect. We'll discuss it. Yeah, no problem. So thank you. Thank you. Good morning, sir. Hello. Yes. Hello. Yeah, Udayji. Go ahead. Ashish ji, yes. Hi, Uday here. Yeah. So it was excellent session today. Yeah, just wanted to ask one thing. Like, if I'm trading on a cash, no, even on that day, should I check OI? Yes, you should. Doesn't matter you're trading cash stocks or you're trading cash or F&O. See, OI is just a data point, and you should check to understand where is the stock moving. So, because even if you're trading in cash, it's your hard-earned money, and you want the trade to go well, good for you. तो आपके पास जितना अच्छा टूल रहेगा आप उतना you'll be better equipped. सर वो ब्लिट्स के फीचर वाली जो आप साइट शेयर करना चाह रहे थे वो कर दीजिए. ब्लिट्स जो है एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आपको मेरे वेबसाइट पे पूरा डेटा मिल जाएगा. यू कैन कनेक्ट टू माय टीम देयर. अगर I'm one of the director in Quant Express Technologies, अगर कोई टीम नहीं रिस्पॉन्ड करती है तो आप मेरे को डीएम करो. I'll look into it personally. Sir, because this session is not about blitz and we don't want to sell a product here. It is only for the Bollinger Band and the chart setup I use. So I'll restrict to that only. But please DM me. I'll be happy to help you out on blitz. Okay, sir. हमारा धंधा है, हमारी रोजी रोटी है, तो obviously we will be very keen to help you out. ठीक है सर, साथ में करेंगे. हेलो आशीष जी. या L&T फाइनेंस के जो चार्ट में आपने बताया था कि जो कैंडल में आप एंट्री किए थे, वहां पर तो मतलब बेस बनाया हुआ था लेकिन कोई चैलेंज होगा, बीबी ऊपर जाएगा ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी. तो आपने वहां पर बुल कॉल स्प्रेड दिया हुआ था. मैंने राजन जी वही बताया कि इसीलिए हमने स्प्रेड के थ्रू एंट्री किया, उसमें फ्यूचर्स के थ्रू नहीं किया. और वी फाइंड आउट कि एक तो वो सपोर्ट ले रहा है, तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रीएम्प्टिव ट्रेड. जोन 1 में जरूर था L&T फाइनेंस, तो इसीलिए हमने बुल स्प्रेड कॉल स्प्रेड के थ्रू एंट्री लिया कि हमारा डिफाइंड रिस्क रहेगा एंड रिटर्न्स भी अच्छे आ सकते हैं. सो इट वाज अ लो रिस्क स्ट्रेटजी. इसमें जो है डेबिट स्प्रेड के बजाय क्रेडिट कर सकते थे, क्रेडिट स्प्रेड भी, बट डेबिट स्प्रेड बना लिया हमने क्योंकि पैसे कम लग रहे थे. 30,000 में काम हो रहा था एक एक लॉट में, एंड वी वांटेड टू वी ट्रेडेड अ गुड क्वांटिटी. तो 30 नहीं 40,000 शायद लगे होंगे एक स्प्रेड बनाने के लिए. सो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट रीजन. ओके, थैंक यू सर. Hi sir, Anirudh here. Am I audible? Yeah, hi. Yeah, we have been in touch for a while now, if you remember, through LinkedIn and Twitter. So yeah, Anirudh, I know you now. We've spoken, we've chatted a lot of time. Yeah, sir. So no sir, thanks to you, because जो रिटेल सेक्टर के लिए रिवॉल्यूशन आएगा वो जैसे अभी फेस टू फेस वगैरह एंड जैसे आप जो फ्री में नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो उसके थ्रू ही आएगा. तो सर डाउट दो थे. एक तो आई थिंक ऐसा रूल है ना कि बॉलिंजर बैंड के बाहर, मतलब अपर बॉलिंजर बैंड जो जोन 1 के भी ऊपर है और जोन 4 के नीचे जो वी से कि नीजर रिएक्शन आ गया, वहां पे आई थिंक बाय नहीं करना चाहिए. इफ जोन 1 के ऊपर मतलब बॉलिंजर बैंड 2 के ऊपर यू आर सेइंग? सर जो जोन 1 की अपर बाउंड्री, जैसे अभी ये L&T में 90 था तो आपने देखा कि पहले बर्स्ट हो गया, फिर वो एक बहुत बड़ी मदर कैंडल, लेकिन वो केम डाउन. सो
मैंने आपको एक बार ट्विटर पे एबर्ट का ट्वीट पूछा था एंड आपने बॉलिंजर बैंड में ही पॉइंट आउट करके बताया था. सो इज देयर अ रूल कि जब ऊपर का एंड लोअर बाउंड्री लाइक टूट जाए, व्हिच ऑलमोस्ट सीम्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ नी जर्क रिएक्शन, तो बैंड के बाहर बाय नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर अवॉइड करता हूँ बाय करना. Okay. And like for the second out, correct me if I'm wrong, is I think I read it somewhere online that zone 1 का ही जो upper boundary